Assalamu alaikum, guys. I hope you're all doing well. Okay, so we are on question 45 of the NUMS paper now, 2016. Okay, this is Sir Shafat Khan on your screen. Okay, so when a charged particle is projected perpendicularly in a magnetic field, its trajectory is, well, you have a magnetic field right here. Let's say this is a magnetic field going into the page. This is a charged particle. It's perpendicular to the magnetic field. It's going to experience circular motion due to the magnetic force that acts on the charged particle. You use Fleming's left-hand rule to determine the direction of the force. It's going to be upwards. Over here, so it's going to move upwards, and the curve is going to be circular in shape. Okay, because in magnetic field, the centripetal force is provided by the magnetic force, and the magnetic force always stays perpendicular to the direction of velocity of the charged particle, to the velocity of the charged particle. Therefore, it has to be a circular motion throughout the motion because the direction of force and velocity are always perpendicular. So 45 is D, right? And we are done with the physics section. Now this is the English section. You guys can do this on your own, or you should be doing it on your own. Okay, I'm not going to do the physics, the English section here. Okay, just scrolling through the questions over here, which are written. And then after them, we are going to move on to the biology section. Let's do the most important questions out of biology. The number of bones in the skull. Okay, so how many bones do we have in our skull? 22 bones. Okay, 8 facial, 14 facial, and 8 cranial. So 8 plus 14 turns out to be, yeah, 22. NADPH produces how many ATP molecules? One NADH, sorry, one NADH. Number of ATP molecules from one NADH. One NADH will have one hydrogen atom, okay, one hydrogen ion, one proton. And when one proton passes through the chemiosmotic mechanism, through the motor, one H positive produces 3 ATP molecules. So 3 ATP is going to be your best choice. Then, how much MI blood is pumped by each contraction? ML blood is pumped by each contraction. Now, this is again something you should know by facts. None of these options look like the correct options because the question doesn't seem to be very clear. By contraction of what? Contraction of the ventricles, contraction of the atria, contraction of the blood, or one complete circuit of the heart, or circuit of the body. If it's one complete circuit of the body, we've got 5 liters blood. 5 liters blood is going to be pumped. So 5 liters to 4,500 is the closest to 5 liters. Okay. Fundography is relative to stomach. Okay. The fundus of the stomach. Fundus is a part of the stomach. The uppermost part of the stomach is called the fundus. Therefore, it's called the fundoscopy. Okay. If this is our stomach, okay, it has a greater curvature and a lesser curvature. So this uppermost portion, this is called fundus. Okay, fundus, body and stuff. So fundoscopy, stomach की जो endoscopy होती है उसे कहते हैं. Shape of tobacco mosaic virus. Coma, spherical. ये आप खुद देख लीजिएगा. Facts वाले questions में skip कर रहा हूँ. Bile is used in fat emulsification. And what else? Yeah, that's all. Amphibian's heart has how many chambers? देख लीजिएगा खुद ही. Plasma membrane is named so much so because it surrounds the protoplasm. Plasma membrane surrounds the protoplasm, not the cell wall. Okay, not the cell wall. And protoplasm में क्या क्या आता है? ये important है. आ जाता है. Nucleus plus cytoplasm is protoplasm. Then which of the following is not a basic unit of the cell? So cell wall is not a basic unit because animal cells में नहीं होता. And group of cells performing the same function is called a tissue. ठीक है. Amphibians live on water and land both. ठीक है. Mutations occur in the DNA. प्रोटीन में और RNA में mutations नहीं होती. Primarily mutations यहाँ होती है. फिर उसके बाद truncated proteins इसके impact आते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. तो म्यूटेशन डीएनए में ही होती है. बस डीएनए आपको बेस्ट चॉइस. ठीक है. डायरेक्ट म्यूटेशन कहीं और नहीं होती. डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया में. डीएनए होता है. क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. इसी तरह से
Which enzyme presents in stomach curdles the milk? So milk curdling enzyme कौन सा है भाई? रेनिन कहते हैं उसे, रेनिन, RENNIN, रेनिन, ठीक है। देन germ theory was given by, देख लीजिएगा खुद ही। Then hybrid black guinea pigs are crossed with each other. The resulting offspring is gonna be hybrid black guinea pigs. तो ब्लैक गिनी पिग्स की जो क्रॉसेस है, व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से ब्लैक कलर डोमिनेंट है या व्हाइट कलर डोमिनेंट है, ठीक है। अब देखते हुए, क्योंकि ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मींस इट्स गोना बी बोथ। अच्छा, कैपिटल बी डोमिनेंट को कह देते हैं, स्मॉल बी रिसेसिव को कह देते हैं, ठीक है। कैपिटल बी जो है ना, ये ब्लैक के लिए होगा। क्यों ब्लैक के लिए होगा? क्योंकि उन्होंने पहले से कह दिया कि अगर हाइब्रिड है तो वो ब्लैक ही है, मतलब ब्लैक डोमिनेंट है, ठीक है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि डिफरेंट एलील्स, यानी एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव आर प्रेजेंट, राइट। अ डोमिनेंट एंड अ रिसेसिव इज बीइंग crossed against a dominant and a recessive. ठीक है, now they are gonna have different types of gametes, okay? A capital B and a small b, and a capital B and a small b, and then that would mean you will have capital B joining together to give a black guinea pig. Okay, this one is black. Then capital B joining with a small b to give you again a black guinea pig. Then capital B and a small b again to give you a black guinea pig. So it's a 3:1 uh, classical Mendel's ratio. Okay, when heterozygous is crossed against heterozygous. And then this one is white. Okay, recessive is white. So three black and one white. There you go. Three black and one white is the best choice. Then the enzyme in breast milk which causes the coagulation of milk or forms precipitates of milk are again coagulation of milk वाला कौन सा है भाई? renin, ये डबल एन आता है इसमें वैसे। egg laying birds are called, देख लीजिएगा खुद ही वैसे तो। चलो आगे, which of the following has both external and internal digestion? देख लीजिएगा। milk drinking babies have an additional enzyme called, वही बात हो गई। ये क्यों repeated questions है? egg laying mammals are called, देख लीजिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टोटल 38 होते हैं, लेकिन दो कंज्यूम हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं, ठीक है। Now which process takes place during the movement of glucose from body fluid to blood? तो बॉडी फ्लूइड से अगर ब्लड की तरफ जा रहा है, ग्लूकोज मूव कर रहा है ना, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मूव कर रहा है, सही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ड्राई लैंड इन, ये आप देख लीजिएगा खुद। इकोलॉजिकल सक्सेशन किस में होती है? मतलब ये जो जितने भी एनिमेलिया और प्लांटी वाले क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, वो आप खुद देख लीजिएगा। वॉइस बॉक्स, ऑर्गन ऑफ वॉइस इन बर्ड्स, तो ये अब इसका अपना अलग एक ऑर्गन होता है, वो भी आप देख लीजिएगा। ट्रिपोनेमा पैरिडम का सिफिलिस होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है बस वो। लमार्क इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड inheritance of acquired trait. Then commercial method of producing millions of seedlings in limited time. Cell wall is synthesized by cellulose से तो बनता है, लेकिन just synthesized by Golgi apparatus. In tissue culture, cells are held together by thyroid gland requires high amount of iodine. ये clinically relevant है, अगर iodine की कमी होगी तो goiter हो जाएगा। Which of the following is not the function of cerebrum? So skeletal muscles, intelligence, thinking, and volunteer digestion. Digestion इसका काम नहीं होता। Which of the following is the function of adrenaline? अच्छा, डाइजेशन इसलिए भी काम नहीं होता क्योंकि सेरिब्रम जो है ना, सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और डाइजेशन आपकी इनवॉलंटरी है, ठीक है ना, वो आप खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन? सो एड्रेनालिन जो है वो आपको एक एड्रेनालिन रश देता है, तो एड्रेनालिन इंक्रीजेस द हार्ट रेट, इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट एज वेल। सो डी आपका आंसर होगा। एंटीबायोटिक्स आर, क्योंकि दिस इज अ फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, फ्लाइट, फाइट, फ्राइट, इन तीनों में एड्रेनालिन रश होता है। एंड एंटीबॉडीज आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, glycoproteins, fibrous proteins, glycolipids. They are globulins, so globular. This A is correct, okay, because antibodies are also known as immunoglobulins. Albumin and globulin वाला जो globulin है वो. Hepatic and pancreatic secretions are also stimulated by
सिक्रीटिन एंजाइम, ठीक है ना। सिक्रीटिन जो है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को करवाता है। देन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज मच हायर अफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज, इन सब में मायोग्लोबिन की सबसे हाईएस्ट अफिनिटी है। एंड इसका रीजन ये है क्योंकि जो ब्लड आपका ब्लड वेसल में आ रहा होगा ना, उसके साथ अगर ये मसल टिश्यू पड़ा हुआ है, लेट्स से, so I'm just drawing a tissue over here, तो मसल टिश्यू ताकि उसको उससे ऑक्सीजन ले सके, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले सके, जो एचबी अपने साथ O8 ला रहा है उसे ये कंज्यूम कर सके, तो इसलिए मायोग्लोबिन जो मसल्स में होता है उसकी अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, ताकि वो इससे छीन सके। देन कोलम इज अ कैविटी लाइंड बाय, सीलोम इज अ कैविटी लाइंड बाय, ये देख लीजिएगा खुद ही, कैविटी होती है वैसे एंडोडर्म की होगा, लेकिन देख लीजिएगा। Endoparasite of human cattle and pig, that cattle completes its life cycle, देख लीजिएगा। Then gymnosperms immediate source of energy is are carbohydrates, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज होता है। hemoglobin exhibits quaternary structure, quaternary उसे कहते हैं when you have more than one polypeptide chain, okay. Then arteriosclerosis is, arteriosclerosis कहते हैं it's a metabolic disorder, infectious disorder, nutritional deficiency, degenerative disorder होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी हार्टनिंग ऑफ दी आर्टरीज होती है, उनकी डिजेनरेशन होती है। देन एंड स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। देन व्हेन phenotype of heterozygote is in between the phenotypes of both the homozygote parents, it is called, अच्छा it's in between ना, यानी कि ना एक का है और ना दूसरा का है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस, इन दोनों में से अब हमें सेलेक्ट करना है। तो हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही इसका आंसर होगा, फिर इट्स इन बिटवीन द टू, ठीक है, कंप्लीटली डोमिनेंट कोई भी नहीं है इनमें से। देन क्लोनिंग इज अ फॉर्म ऑफ asexual रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें कोई गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन द डीएनए एंड जीन, ठीक है, डीएनए एंड जीन। देन द प्रोटीन होता है वैसे, डीएनए एंड प्रोटीन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डीएनए एंड जीन ही सही है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय लाइट, एक्चुअली लाइट इज द वन दैट इज द मेन फैक्टर। लेकिन लाइट के साथ और क्या दिए, न्यूट्रिएंट्स भी, हाँ ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी इसका ऑप्शन हो सकता है, बट लाइट इज अ प्राइमरी फैक्टर। Okay. Diseases in living organisms which are caused by parasites are called infections. Infestations. Infections. Parasitic infestation होती है, सॉरी, पैरासाइट्स की इन्फेस्टेशन होती है, पैरासाइट्स की इन्फेक्शन नहीं होती, इन्फेस्टेशन होती हैं, ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। टेक्निक यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड, इनमें से कौन सी है, लिथोट्रिप्सी है, ठीक है, जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं। माइक्रोसेफेली स्मॉल साइज स्कल ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसीज की वजह से। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन प्लैनेट अर्थ इज सेल्यूलोज, ठीक है। Then the active site of an enzyme is formed by a few of the enzymes. R groups of amino acid and H2 group CHO are exposed to, it's the R groups. Okay, active site different enzyme के different इसलिए होती है क्योंकि R groups of हर एक अमाइनो एसिड के अलग अलग होते हैं, बाकी जिसके ग्रुप्स होती है वो तो सेम होते हैं सबके। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग इज अ फंक्शन ऑफ एसईआर एंड लिवर सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही वैसे काम है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर सेल्स, एक सेकेंड गाइस, क्योंकि देखिए इन सेल पूछा है ना, इन सेल पूछा है इन्होंने आपसे, सेल का पार्ट पूछा है, मतलब सेल नहीं। Which of the following bacteria are without cell wall? Mycoplasma is the smallest bacterium without a cell wall. Gram-negative bacteria are stained pink by the use of crystal violet. Grams iodine, saffron, ये भी जरा देख लीजिएगा बुक से, ठीक है। Which of the following is a, देख लीजिएगा, सुडो, ये भी देख लीजिएगा। एनिमल्स में लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्लाइकोजन नहीं करते, ग्लाइकोजन लॉन्ग टर्म नहीं है, फैट है लॉन्ग टर्म। प्रोसेस फॉस्फोरिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला, ठीक है, फॉलोइंग जो है ना वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होते हैं, जो इनवॉलंटरी वो मेडुला से होता है। ह्यूमंस आर
एमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। हाँ ये भी उसी बुक में है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। स्पाइनल नर्व्स आर फंक्शनली मिक्स नर्व्स। ठीक है ना, इसमें मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं स्पाइनल नर्व्स में। नेक्स्ट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज ईस्ट्रोजन। ठीक है ना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन होता है। Thymus are measured in thymus glands. That's why they're called thymus. They're produced in bone marrow and matured in thymus. Chemical nature of antibodies, globulin, globulin नहीं है इसमें, तो glycoprotein है। सही। The first human hormone produced by recombinant DNA technology। और ये भी फैक्ट है, देख लीजिएगा। विंग ऑफ बर्ड्स, ये देख लीजिएगा। The first simplest oxygen producing organism was cyanobacteria। ये भी देख है वैसे फैक्ट। They are more common in human moles than females। मेल्स, ह्यूमन मेल्स देन फीमेल्स। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा कॉमन होते हैं मेल्स में। ठीक है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होते हैं वो, अच्छा ट्रेड्स पूछ रहे हैं आपसे। रिसेसिव तो होते ही नहीं है। वाई लिंक्ड ट्रेड्स होते हैं। वाई लिंक्ड डोमिनेंट की होते हैं। ठीक है। लेकिन फीमेल्स में वाई लिंक्ड होते ही नहीं है। मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। यानी फीमेल्स में भी होते हैं, कम होते हैं, और मेल्स में ज्यादा होता है। तो एक्सीलेंट रिसेसिव दोनों में होते हैं, लेकिन मेल्स में ज्यादा कॉमनली आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स बाय जीन मैनिपुलेशन इज कॉल्ड जीन टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी। ठीक है। फिर a trait whose alleles are present in both male and female but expresses more in one sex than in the other is sex linked। X linked trait कहते हैं सर। ठीक है, या sex linked कहते हैं। Next, what is the chemistry? What is the name of this compound right over here? It's a cyclo compound again. इसमें जरा पहले देख लें कि लॉन्गेस्ट चेन के 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती है। 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। अब देखिए कौन सा कंपाउंड नाम बन रहा है आपके पास। अगर आप लास्ट वाले को देखें तो 4 इथाइल है। तो 4 इथाइल अगर होगा तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप साइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं, इसको ये साइक्लोहेक्सेन है, तो आप इसको फर्स्ट ले रहे हैं, सेकंड थर्ड नहीं हो सकता ये। अगर इसको फर्स्ट ले रहे हैं तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन पे आपके पास एथल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे मेथल है, फर्स्ट कार्बन पे मेथल है। तो 4 एथल 1 2 डायमेथल साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन आप अगर सेकंड वाला देखें, हम कह रहे हैं कि 2 एथल 4 5 डायमेथल साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसके इन दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबरिंग है वो डी की ही है। we're gonna go with D. Which of the following compounds possesses at least one bond? Which bond? At least one bond? One bond तो सब नहीं है। Which of the following carboxylic acids will be the most acidic? Most acidic वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मौजूद होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव पता है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है, और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ एक क्लोरीन तो मौजूद है। ठीक है, एक ही है। यहाँ पर दो क्लोरीन है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, और यहाँ तो है ही नहीं, तो दो क्लोरीन वाला सबसे एसिडिक होगा। सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू कन्वर्ट ब्यूटानोइक एसिड टू ब्यूटानॉइल क्लोराइड? ब्यूटानोइक एसिड से ब्यूटानॉइल क्लोराइड की तरफ कन्वर्ट करना, CCl4 नहीं हो सकता। बाकी ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स विल रिड्यूस ब्यूटानोइक एसिड टू ब्यूटानॉल? रिड्यूसिंग एजेंट्स देखना है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एनहाइड्रस, नॉट हाइड्रस, नॉट विथ वाटर, विदाउट वाटर। सही है ना। ए। देन equation shown the reaction between element X and dilute hydrochloric acid. Which types of bonding are present in element X and in compound HCl2? अब क्योंकि HCl2 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस तो जैसे metal, क्योंकि metal when reacts with an acid is going to release the hydrogen gas and a salt. Okay, so this has to be metal, so it's a metallic, and then metallic compounds are mostly ionic, not covalent. Which of the following has the highest electrical conductivity? So again, graphite. Then where part of a polymer has the following structure. Okay, shown right over here. Okay, CH2 is being repeated again and again. We can simply just take out one, and then that's gonna be our monomer. CH2 double bonded with the CH2. ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है। तो अब देखते हैं कि कौन CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2 का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4। सही है। Then the common features among the species C and CO and NO are
both order 3 and isoelectric, both order 3 and weak field ligands, both order 2 and pi acceptors, isoelectric and weak field ligands. ऑर्डर 3 के तो होता है ये, आइसोइलेक्ट्रिक है या नहीं, ये देखना है। ये कार्बन है, Cn नेगेटिव होता है वैसे। साइनाइड, ट्रिपल बॉन्डेड। बहरहाल कार्बन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 7 होते हैं, और एक और तो 8। तो 8 और 6 14। तो यहाँ पर 6 और 8, ये भी 14, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक है। और यहाँ पर 7 और 8, तो 15 हो गया, आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है। एक आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से तो ये पाई एक्सेप्टर्स हैं, ये पाई एक्सेप्टर्स नहीं है, पाई डोनर्स है। तो द वीक फील्ड लाइगेंड ही सबसे बेस्ट चॉइस होगा आपको, ठीक है। बस आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है ना ये। और बॉन्ड ऑर्डर 3 तो होता है। सही है, बी विच रह लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम 19 और SU2 P6 3S2 3P6। यहाँ तक 12 हो गए, 18 हो गए, 20 हो गए, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। और S1, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। At equilibrium, which of the following reactions is not affected by pressure? The one with equal number of moles, या ऑप्शन ए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी 1 मोल है, राइट साइड पे भी 1 मोल है। Sum of all exponents of which of molar concentration in terms in the rate equation are these defines? Sum of all of them is order of reaction, ठीक है, कि rate equation आपके पास given और rate is equals to K times concentration of A times concentration of B। अगर आप इसके जो पावर्स हैं इनको अगर आप ऐड कर दें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा आपको, ठीक है। Hydrogen and chlorine do not react with in the dark, but in presence of light, a vigorous reaction is initiated due to the formation of chlorine free radicals. Okay, in the light, chlorine free radicals are formed. The rate of a gaseous reaction is given by R equals K times concentration of A multiplied by the concentration of B. This is the rate equation given in which you've got the two reactants over here, okay, A and B. If the volume of the vessel containing these gases is reduced to 1/4 of its value, okay, the volume is reduced to 1/4, the rate of the reaction relative to the original rate would be how much? Okay, volume is reduced to 1/4, that means the pressure is reduced to 4 times, correct? Or volume is reduced to 1/4, so let's just look at the concentration. Concentration is moles upon volume, right? So the volume of the vessel containing these gases, so both of their volume is going to reduce, right, to 1/4. A is also going to become 1/4, concentration of A, and then the concentration of B is also going to become 1/4, right? But again, volume is in the denominator. So if volume decreases to 1/4 of its value, then the concentration becomes 4 times of its value for A and 4 times of its value of B. Because the rate is proportional to the product of these two, it's going to be 4 multiplied by 4, which is 16 times. The rate is going to become 16 times the original rate. Okay, because both of them, their concentrations have increased by 4 times. Now, solid sodium chloride is a bad conductor of electricity because solid state there are no free ions. No
migration of ions. There is no migration or no movement of ions. Okay. At 25, the equivalent conductance at infinite dilution of HCl solution is 425, while its specific conductance is shown. If the apparent degree of dissociation is 90 degrees, the normality of the 90%, the normality of the solution is how much? So the normality, to calculate the normality, you need to have the, sorry, normality, not molality. This is a okay, guys. So ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है as such. मतलब इस तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, तो अगर हम इसे छोड़ भी दे तो इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका एक लंबा मेथड है, ये इंडियन बोर्ड का क्वेश्चन है। नाउ इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, the total heat constant, the total heat or total energy is constant. So pressure is constant, gas is isothermally expanded, perfect heat insulation. You can mention this one. Okay, because no heat is entering nor any heat is leaving. Then enthalpy of energy constant. Energy is a constant over there. Okay, enthalpy of a compound is equal to its enthalpy of a compound is equal to enthalpy of combustion, because that is how a compound can release all of its energy. A mixture of ethyl and isopropyl iodides is heated with sodium in dry ether. According to Ward's reaction, the product obtained is okay. Ethyl iodide and isopropyl iodide का मिक्सचर अगर एक साथ बर्न करें तो क्या होगा? आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, assuming that all other carbon atoms have hydrogens attached to them. And when you've got ethyl iodide, meaning ethyl iodide, now in this case, it's just the alkyl groups that are going to attach to one another, this part and this part. So when they attach, you get your answer, CH3, CH2, etc. And then this is going to attach to this carbon, the central carbon. और इस वाले पे कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ नहीं है। तो इससे मिलता जुलता कोई आंसर अगर हम निकालना चाहें, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अपना है और दो CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, फिर उसके बाद एक CH2 लगा है और एक CH3 लगा है, तो CH2 दो है, ये ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं आ सकते, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। 154 mole of ethanol reacts with 1 mole of PBr3 to form 3 moles of bromoethane and 1 mole of X. Which of the following is X? PBr3 में H3PO3 बनता है, ठीक है, as a byproduct. Conversion of phenol to benzene in presence of zinc involves, ये जिंक है, डिहाइड्रेशन है ये बेसिकली, जिंक इसके OH को निकाल देता है, बेंजीन बना लेते हैं, खुद जिंक ऑक्साइड बन जाता है, तो ठीक है, दिस इज डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। Phenyl methyl ketone can be converted into ethyl benzene in one step using, you've got phenyl methyl ketone, phenyl methyl ketone into ethyl benzene. Yeah, so this is reduction होगी इसकी, इस ग्रुप की रिडक्शन होगी, रिडक्शन के लिए बेस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कीटोन्स की रिडक्शन, ठीक है। And which of the following will not undergo aldol condensation? aldol condensation के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? So it's alpha hydrogen that we need to look at. Alpha hydrogen is the hydrogen present on the carbon right next to the functional group.
So if this is your aldehyde, the carbon right next to it is right here. So not propanaldehyde. Propanaldehyde will undergo aldol condensation. This will also undergo aldol condensation because it has alpha hydrogens. So both of them are not the answer, but benzaldehyde is the correct answer because in benzaldehyde, you can see this is a benzene ring. And then on one carbon where the aldehyde group is attached, the carbon next to that aldehyde does not have any hydrogen. So no alpha hydrogen present. So benzaldehyde will not undergo aldol condensation. They're asking us which one will not undergo aldol condensation. Okay. Then treatment of propionaldehyde with dilute NaOH solution gives what? Okay, so if you're adding an NaOH to an aldehyde, that is going to get added by nucleophilic addition reaction, as you can say. Propionaldehyde, propional aldehyde, not a propanal. It's basically what they're saying. So this is your propanal. Okay, added an OH additionally from over here. So this will also become an OH. When that happens, now you've got two OH groups attached. But wait, no, 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 no. That's not what they mean, I guess. It seems to be a hydrolysis reaction. Guys, so this is actually a condition of aldol condensation as well, in which you are heating an aldehyde with an alpha carb hydrogen with a dilute alkali. So we take the 2 moles of the same aldehyde, propanal in this case, and then one of the two aldehydes group is gonna get reduced into OH. So this OH carbon double bond O with a hydrogen is gonna convert into carbon with a OH, and this carbon is gonna link with the CH3 part of the other aldehyde. So it's gonna come in one line like this. Okay, and so B is the correct answer. So aldol condensation, and the product is an aldol, meaning a compound that has an aldehyde group and an alcohol group. Which of the following solids is an example of a substance with a macromolecular structure? Silicon dioxide or yeah, silicon 4 oxide. SiO2 is the one. Okay, which is a giant molecular structure. Which of the following statements is true? All nitrates of group 2 metals are decomposed to heat to give oxide and NO2. No, that's not the case. All nitrates are going to be broken down to produce NO2, oxide, and oxygen. So metals dissolve in concentrated nitric acid to give hydrogen. That's true. They do dissolve in nitric acid to give hydrogen, but let's look at the other options. The alkali metal nitrates are insoluble. No, that's not correct. They are soluble. Of course, ammonium nitrate is alkaline into litmus paper. No, that's not the case. It's neutral. Sodium nitrate is acidic. No, again, not neutral. And then this is also not complete. It also has oxygen. The only option left is E. That with an acid it produces hydrogen gas. Which property of group 2 elements, magnesium to barium and their compounds, increases with increasing proton number? Magnesium, magnitude of the enthalpy change of hydration of the metals. Going from magnesium to barium means going down the group from magnesium to barium. Now going down the group, the enthalpy change magnitude is going to rather decrease because the charge density is decreasing due to the increase in the atomic radius. Okay, the pH doesn't change. Well, the pH actually, or did they say increases, right? The pH rather decreases slightly. Doesn't increase. The solubility of the sulfate also decreases, doesn't increase. Barium sulfate is the least soluble. Magnesium sulfate is the most soluble. Then the solubility of the stability of the carbonate to heat, yes, that increases. Going down the group, it increases. And tendency to form complex ions has nothing to do with it. So yes, the stability of the carbonate does increase. This is the only one. Option D is the only one that is correct. Because going down the group, polarizing power increases, charge density increases, and hence the bond becomes uh, more stronger. Okay. The reduction of nitride produced a compound with this formula. Which one of the following compounds will be produced with the same nitrile was hydrolyzed to heat by heating with hydrochloric acid. So if you hydrolyze nitrile,
Hydrolyzing a nitrile is going to result in the formation of a carboxylic acid of the same compound. Okay, so instead you will have a CH3, CH2, and then COH. Yeah, hydrolysis results in carboxylic acid. So do we have that in here? Yeah, this one, option D. Because one of the three carbons is going to get converted. Which one of the following pairs of substances react together, forming an organic product that gives a neutral solution in water? With NaOH, this is going to produce a salt, and salt may be neutral. Let's see. So it's going to give us a salt, but that salt is slightly acidic. This is acidic solution. With this one, this is going to also give us salt, which is also slightly acidic. It's going to give us a acyl chloride. Okay, so it has to be an organic product that has to be neutral. So where the last one is an organic, all of them are organic, in fact. The first one that you guys can see right here is good in making a buffer solution. So not exactly neutral. It's only the last option that gives us a compound that's neither acidic nor basic. Okay, so I would go with E. Now, a solid X dissolved readily in water to give a weakly alkaline solution. On evaporation of water, X was recovered and changed. Which of the following could be? Why? So they're talking about X, but they're asking about Y. So I guess this is a misprinting question. Let's just leave it. Just find this out yourself. Yeah, now this is a good question. Now, equimolar means 1 mole of each. If you dissolve all three of them in water, what happens? You get one barium and two chloride in here, right? This is the one where you got the most number of moles of the solutes, right? Over here, you get one sodium and one chloride ion, so 2 moles of solute. Over here, you don't get any dissociation at all. Just to close again. So, osmotic pressure of barium chloride is going to be the greatest because it has 3 moles. 1 mole of sodium, 2 moles of chloride, followed by NaCl, followed by sucrose, option D. Color of chromium ion is blue. Okay. Which of the following will react with water? So carbon is a nucleophile. Which of these is the easiest to attack? Cannot be this one because iodide is surrounding the attacking carbon. Again iodide hindering the surrounding carbon. It's all three, option D, where the iodide is allowing. I mean, iodide is on the corners, right? So this partial positive carbon is free to be attacked. Similar is the case over here. So it can be attacked by nucleophile. And for empirical formula of ascorbic acid, you can calculate that on your own.
Okay. Order of reaction of an SN2 reaction. Which one is going to react the fastest? The one with the least bond energy is going to react the fastest. So it's Ri, having the least energy. Then RBr, RCl, and Rf. Natural rain forms dash in presence of carbon dioxide in the air, carbonic acid. When carbon dioxide dissolves in rainwater, it forms carbonic acid. The major source of unburned hydrocarbons in the atmosphere is petroleum. Among the most abundant biomolecules, carbohydrate is most abundant. जेनेटिक म्यूटेशंस डीएनए में होती है एंजाइम्स आर फंक्शनिंग विद इन द सेल्स आर कॉल्ड एंडोएंजाइम मैक्सिमम परसेंटेज अमोनियम नाइट्रेट में ये आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं alums are added for disinfection. Yes, did you confirm this one? Not confirmed it yet. We are done with 2016. So that's it for today. All the way best.